नेक्स्ट बात किया जाए तो रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स क्या होता है? तो लिंग्विस्टिक्स में रजिस्टर्स को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है एज द वे ऑफ अ स्पीकर यूजेस लैंग्वेज डिफरेंटली इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। डिफरेंट सर्कमस्टांस में लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से यूज करने का जो तरीका होता है उसी को कहते हैं रजिस्टर कहते हैं। थिंक अबाउट द वर्ड्स यू चूज, योर टोन ऑफ वॉइस, इवन योर लैंग्वेज। These variations in formality, also called stylistic variation, are known as register in English linguistics. Registers are marked by a variety of specialized vocabulary and turns of phrases, colloquialisms, and jargon, and a difference in intonation and pace. Registers are used in all forms of communication, including written, spoken, and signed. देखिए रजिस्टर्स हर तरह के कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, चाहे रिटन, स्पोकन या साइंड, किसी भी बेस का हो। डिपेंडिंग ऑन ग्रामर, सिंटेक्स एंड टोन, द रजिस्टर में बी एक्सट्रीमली रिजिड और वेरी इंटीमेट. You don't even need to use an actual word to communicate effectively. The concept of register refers to variations in language determined by function, medium, and formality or style. An examination of the registers of verb forms and noun phrase yielded results important to the writer of English language courses. Language registers range on a scale from most formal to most informal. The 5 levels identified have been given specialized names by linguist. लिंग्विस्ट के 5 लेवल हैं, यानी कि लिंग्विस्ट 5 टाइप का होता है: फ्रोजन, फॉर्मल, कैजुअलिटेटिव, कैजुअल और इंटीमेट. कौन कौन से 5 टाइप्स? फ्रोजन, फॉर्मल, ये 2 याद हो गया. फ्रोजन, फॉर्मल, कंसल्टेटिव, कैजुअल, इंटीमेट. कंसल्टेटिव, कैजुअल और इंटीमेट. टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक रजिस्टर. Some linguists say there are just 2 types of registers, one is formal and second is informal. This isn't incorrect, but it is an oversimplification. Instead, most who study language say there are 5 distinct registers. Frozen, one is frozen, second is formal, third is consultative, and fourth is casual, and fifth is intimate. So frozen, what is frozen? This form is sometimes called the static register because it refers to historic language or communication that is intended to remain unchanged, like a constitution or prayer. The Bible, the United States Constitution, the Bhagavad Gita, रोमियो एंड जूलियट. तो फ्रोजन क्लियर है. फ्रोजन को कभी कभी स्टैटिक रजिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह हिस्टोरिकल से रिफ़र करता है. और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन या प्रेयर की तरह होते हैं, जैसे बाइबल, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, भागवत गीता, रोमियो एंड जूलियट. फॉर्मल की बात करें तो लेस रिजिड बट स्टिल कॉन्स्ट्रेंट. द फॉर्मल रजिस्टर इज यूज्ड इन प्रोफेशनल, एकेडमिक और legal settings where communication is expected to be respectful, uninterrupted and restrained. Slang is never used and contractions are rare. A TED, talk, a business presentation, the Encyclopedia Britannica, Gray's Anatomy by Henry Gray. Next है consultative. People use this register often in conversation when they are speaking with someone who has specialized knowledge or who is offering advice. Tone is often respectful, use of courtesy titles but may be more casual if the relationship is long-standing or friendly. A family doctor. Slang is sometimes used. People may pause or interrupt one another. The local TV news broadcast, an annual physical a service provider like a plumber. Next, casual. This is the register people use when they are with friends, close acquaintances and co-workers and the family. It is probably the one you
Think of when you consider how you talk with other people, often in a group setting. Use of slang, contractions, and vernacular grammar is all common, and people may also use expletives or off-color language in some settings like a birthday party, a backyard barbecue. Warwick. Next, intimate. Linguists say this register is reserved for special occasions, is usually between two people, and often in provided. Intimate language may be something as simple as an inside joke between two college friends or a word whispered in a lover's car. The term register was first used by the linguist TBW रीड इन 1956। रजिस्टर्ड टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो 1956 में TBW रेड ने यूज किया था।